Bismillahirrahmanirrahim. Okay, students, we are going to start our second session of the intensive reading of Pakistan in the Modern World, a text of a speech that was delivered by Liaquat Ali Khan at the time when he was being conferred upon a degree by the University of Kansas, and he points out over there in the beginning of that speech that he has advisedly chosen the topic of Pakistan in the modern world because of two particular reasons. Number one, he believes that they have done honor to his country, not to him, because he was a man of very inadequate merits. So the gratitude had to be expressed by his country. And number two, the discovery of Asia is not complete. Some 400 years ago, when the discoverers from Europe, the explorers from Europe tried to discover the sea route to India, but by chance they found out America. Now Americans are poised at a moment of the history where they cannot but have to carry forward that voyage of discovery of Asia. He believes that by delivering this speech, he will be of some assistance to them. Okay, students, let's read the lesson and see how he helps them to understand the true background, culture and history of Pakistan and the ideology upon which Pakistan was based. He says that Pakistan is a new state, or to be more exact, a new democracy. As a democracy, it is not yet 3 years old. There was a time when your country, where the traditions of civil liberty, freedom and democracy have not taken such firm root, was a new and young democracy. So there was a time that as Pakistan is a new country, similarly there was a time when your country was also a new country, and the traditions of civil liberty, freedom and democracy had not taken such firm roots in your country in the early years when your country came into being. So it was a new and young democracy, and the memory of your struggle for independence was yet fresh in the minds of men. So if you can in your imagination reconstruct those times, reconstruct means जहन में लाना, किसी चीज को ताजा करना, किसी चीज को दोबारा जो है तख्लीक करना. So if you simply reconstruct those times in your imagination for a little while means कुछ देर के लिए, you will in many ways be reading the history of Pakistan and that of the first 3 years of its new life. So he says that till 3 years ago, Pakistan was only an ideal and a longing. Ideal means tasavvur, or longing ka matlab bhi khwahish. So some 3 years ago, Pakistan was only an ideal and a longing. In South Asia, where present-day Bharat and Pakistan were situated and where the British held sway, there lived 100 million Muslims who for centuries had made this part of the world their homeland. So held sway means hukumat karna. So where the British held sway, जहां पर जो है अंग्रेज जो है वो हुकूमत क्या करते थे, there lived 100 million Muslims, के वहां पर जो है 100 million Muslims रहा करते थे. तकरीबन 10 करोड़ के करीब मुस्लिम रहते हैं. उस दौर की बात कर रहा है वो. So who for a centuries had made this part of the world their homeland, जो कि सदियों से यहाँ रह रहे थे. They had made this part of the world their homeland. They lived side by side with 300 million others, mostly Hindus, who had come to this continent in an earlier era. As the day of freedom for those 400 million people drew near, it became increasingly obvious that at the end of the British rule, these 100 million Muslims would have to live their life as a perpetual political minority. Perpetual political minority means हमेशा के लिए जिसने जो है एक political minority के तौर पर रहना है. Perpetual means हमेशा के लिए, and political minority means सियासी अक़लियत, यानी कि कुछ भी हो जाए इनकी तादाद हमेशा इतनी कम रहेगी कि द न्यू सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, जिसके अंदर वोटिंग की बुनियाद पर हुकूमत बनती है, मुसलमान कभी भी जो है हुकूमत में नहीं आ सकेंगे. सो दैट एक्चुअली फ्लैश्ड अपॉन द मुस्लिम्स. ये बात जो है मुसलमानों के ऊपर जो है आश्कार हुई एज द डे ऑफ फ्रीडम ड्रू नियर. जैसे जैसे आजादी का दिन जो है वो करीब आता गया,
it became increasingly obvious कि ये बिल्कुल जो है वाज़ेह होता गया, obvious means वाज़ेह होता गया, that at the end of the British rule the 100 million Muslims would have to live their life as a perpetual political minority. Long experience and the history of several centuries had taught them that under a dominating majority of 3-1, freedom from British rule would mean to the Muslims not freedom but merely a change of masters. So because they had lived for many years with the Hindus, so it became clear to them that when the British people will leave the country, what will be the freedom for the Muslims? It will merely be the change of मास्टर्स के मुसलमानों के लिए जो है वो आजादी नहीं होगी, सिर्फ आकाओं की तब्दीली होगी, चेंज ऑफ द मास्टर्स. इट वाज not only merely a question of religious differences as that phrase is generally understood. So here he points out कि पाकिस्तान को जो है वो समझते हैं कि मजहब की बुनियाद पर जो है बना, लेकिन it was not merely a question of religious differences as that phrase is generally understood. So सिर्फ मजहब का जो है फर्क जो था वो पाकिस्तान के बनने की वजह नहीं थी. It was not merely that whereas the Muslims were monotheists, the Hindus were polytheists, or the Muslims believed in the Prophet of Arabia and the Christ and the Prophet of the Old Testament, whereas the Hindus did not. So ऐसा नहीं है that the Muslims were monotheists. Monotheist means एक खुदा को मानने वाले, and polytheist means बहुत सारे खुदाओं को मानने वाले. That the Hindus were polytheists and the Muslims believed in the Prophet of Arabia and in Christ and the Prophet of the Old Testament. कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक फर्क था कि मुस्लिम्स जो हैं वो Prophet of Arabia नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखते थे, Christ हजरत ईसा अलैहि सलाम पर यकीन रखते थे, and all the prophets of the Old Testament, जितने भी prophets जो थे वो तौरात में जिनका जिक्र आता है, ओल्ड टेस्टामेंट से मुराद है तौरात, तो जितने भी प्रॉफिट्स जिनका तौरात में जिक्र आता है जो कि हजरत मूसा अलैहि सलाम पर उतरी, उन पर वो यकीन रखते थे. whereas the Hindus did not. The differences were even more pervasive. कि असल में फर्क जो थे दोनों कौमों के दरमियान वो बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर थे, बहुत दूर तक फैले हुए थे. परवेसिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा फैला हुआ. Than this, and created a maladjustment between the two peoples in almost every situation of their daily lives. So it created, their differences were of such nature, उनके फर्क जो थे वो कुछ ऐसी नेचर के थे और इतने परवेसिव थे that they created maladjustment, यानी कि उन्होंने बिल्कुल जो है गड़बड़ जो है पैदा कर दी थी इन दोनों कौमों के दरमियान, between the two peoples. अब देखिए यहाँ पर peoples जो है इसके आखिर में s लगा है तो इसका मतलब है कौमें. जब भी पीपल जो है उसको आप प्लूरल करेंगे तो ये कौमों की सेंस में जो है अपनी मीनिंग देगी. तो द टू पीपल्स वर कंप्लीटली डिफरेंट इन ऑलमोस्ट एवरी सिचुएशन ऑफ देयर डेली लाइव्स. द हिंदूज बिलीव्ड इन अ कास्ट सिस्टम व्हिच मेड इट अ सिन फॉर दोज एट द टॉप ऑफ द हायरार्की टू ईट विद द सो कॉल्ड लोअर ह्यूमन बीइंग्स, और इन सम केसेस even to touch them. कि कास्ट सिस्टम किस किस्म का था जिस पर वो यकीन रखते थे कि उसमें जो था बाजुकात ये गुनाह हो जाता था कि कोई छोटे तबके का आदमी जो है उसको कोई बड़े तबके का आदमी जो है या बड़ी जात वाला आदमी जो है उसको टच भी कर ले, छू भी ले या उससे बात करे. टॉप ऑफ द हायरार्की, हायरार्की का मतलब तबकात जो होते हैं वर्टिकल वे में जो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं. द मुस्लिम्स बिलीव्ड इन द इक्वलिटी ऑफ ऑल मैन रिगार्डिंग इवन द प्रीस्टहुड as unnecessary and a negation of the bond which exists between God and each of his creatures. That what was the level of equality in Muslim religion, that they believe that even priesthood is not necessary to create bond with द क्रिएटर और द गॉड, के जरूरी नहीं कि आप जो है वो आपको जो है किसी मजहबी पेशवा की जरूरत पेश आए खुदा से अपना रिश्ता जो है क्रिएट करने के लिए, खुदा की इबादत करने के लिए. क्रिएचर्स मींस मखलूक, खुदा की मखलूक. अब यहाँ पर देखें हिज जो है वो कैपिटल एच से लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हिज जो है खुदा के लिए यूज हुआ है. So their economic outlook were also very different. So in the beginning he pointed out this social outlook that Hindus believed in the caste system, और यहाँ पर वो जो है economic outlook की बात कर रहा है कि उनकी मुआशी नुक्ता नजर से वो जिंदगी को जैसे देखते थे. It was also different. Outlook का मतलब है सोचने का अंदाज, चीजों को देखने का अंदाज. Their economic outlooks were also very different. The Muslims believed in the right of private ownership for everyone, whether man or women, and had laws of inheritance and
इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। मुसलमान इस बात पर जो है यकीन रखते थे कि हर शख्स को यह हक हासिल है कि वो मेहनत करे तो जो भी वो प्रॉपर्टी कमाए वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी कहलाएगी। एंड वेदर मैन और वुमेन, चाहे वो कोई औरत हो या मर्द हो, एंड हैड लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, और उनके लॉज थे विरासत के, जबकि हिंदुओं में विरासत के कोई भी लॉज नहीं थे। एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस उनके थे, जैसे कि ज़कात का जो है इंस्टीट्यूशन उनका हो गया, और उश्र का इंस्टीट्यूशन उनका हो गया कि फसलें जब आपकी पकेंगी तो बारिश पर पकेंगी तो किस तरीके से जो है आपने उसका उश्र निकालना है, और अगर जो है सरकारी पानी के ऊपर जो है वो पकेंगी तो फिर आपने कैसे उनका जो है उश्र निकालना है, उनको खुदा की राह में एक हिस्सा उनका देना है। वेदर मैन और वुमेन, एंड हैड लॉज ऑफ इनहेरिटेंस एंड इकोनॉमिक सिचुएशन which unlike those of the Hindus were designed to promote the distribution of wealth and discourage vast unearned accumulation. So what was the basic philosophy behind these economic institutions? Institutions यहाँ पर मुराद है असूल, ज़ाब्ते, रिवाज, कि वो ये जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस मुसलमानों में राइज थे उनकी बेसिक फिलॉसफी क्या थी? दैट दे वर डिजाइन्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कि दौलत जो है वो चंद हाथों में सिमट कर ना रह जाए बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और हमेशा गर्दिश में रहे वो दौलत। एंड डिस्करेज वास्ट अनअर्न्ड एक्यूमुलेशंस, और ये इंस्टीट्यूशन जो थे ये इस चीज को डिस्करेज करते थे कि लोग जो हैं वो दौलत कमाएं जो कि वो अपने हाथों की मेहनत से कोई रिस्क उठाकर मुआशरे में सरमाया लगाकर जो है नहीं कमाते, जैसे कि सूद के जरिए जो है कमाना, कि आपने कुछ लोगों को जो है सूद पर जो है कुछ पैसे दे दिए और उसके बाद जो है वो सूद उनसे लेते रहे और आपका पैसा जो है वहीं का वहीं मौजूद है। तो लिहाजा क्या है कि दिस इज कॉल्ड वास्ट अनअर्न्ड एक्यूमुलेशन, क्योंकि आपने जो है अर्न तो उसे किया ही नहीं, आपने कहीं उसको इन्वेस्ट तो किया ही नहीं, आपने तो किसी को कर्ज दिया और उस कर्ज के ऊपर जो है आपने पैसे लेना शुरू कर दिए। So that is why he believed that Hindus believed in this kind of earning, whereas the Muslims did not believe. But since the Hindus were much larger in number, the Muslims feared that under their domination the culture of the Muslims would suffer a great setback and would perhaps be totally eclipsed. इक्लिप्स का मतलब मांद पड़ जाना, खत्म हो जाना। तो the Hindus were in such a huge number that Muslims feared, मुसलमानों को इस चीज का भी खौफ था कि under their domination the culture of the Muslims would suffer a great setback, कि मुसलमानों का कल्चर जो है उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा, बहुत बड़ा सदमा लगेगा एंड वो मुकम्मल तौर पर खत्म ही हो जाएगा। Furthermore, in a country which was on the whole backward, the Muslims economically and industrially were even more backward, कि एक ऐसा मुल्क जहां पर जो कि ऑलरेडी बैकवर्ड था उसमें मुसलमान जो थे वो तो मुआशी तौर पर और इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से और भी ज्यादा बैकवर्ड थे। It seemed certain to them that as an unalterable and perpetual minority, their economic position would grow even worse. So, in a country that was already backward and the Muslims were even more backward economically and industrially, so it was certain for them. It seemed certain to them कि ये बात उनके लिए यकीनी हो गई that as an unalterable means कभी ना तब्दील होने वाली, because the kind of majority that the Hindus had, it will never be changed. Thus to the Muslims in that part of the world, freedom from British rule meant practically nothing unless it meant freedom from the domination of the Hindu majority also. Practically means अमली तौर पर या हकीकी तौर पर ये फ्रीडम उनके लिए जो है कोई मानी नहीं रखती थी, unless it also meant the freedom from the domination of the Hindu majority as well. तो हिंदू मेजॉरिटी से जब तक कि वो अपनी फ्रीडम हासिल ना कर लें, ये फ्रीडम उनके लिए कोई मीनिंग नहीं रखती थी। सो इट वाज फॉर दीज रीजंस दैट दे आस्क्ड फॉर अ कंट्री ऑफ देयर ओन, कि ये थी वो वजूहात दैट वी वर डिफरेंट फ्रॉम देम फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू एंड द डिफरेंसेस वर सो परवेसिव दैट दे क्रिएटेड अ सॉर्ट ऑफ माल एडजस्टमेंट फॉर देम टू लिव टुगेदर इन एवरी स्फीयर ऑफ द लाइफ। सो इट वाज फॉर दीज रीजंस दैट दे आस्क्ड फॉर अ कंट्री ऑफ देयर ओन। द डिमांड वाज नॉट सो अनरीजनेबल as it was made out to be by some people,
at the time. So the demand was not so unreasonable कि ये डिमांड जो थी, ये तकाजा मुसलमानों का एक नए मुल्क का, it was not an unreasonable demand कि ये कोई नामाकूल डिमांड नहीं थी. As it was made out to be, जैसे कि इसे जाहिर किया गया by some people at the time. South Asia was vast enough for two large countries. The Muslims were numerous enough to constitute a nation bigger than most nations in the world, and in South Asia there were large enough areas where they were in a majority. So these are the three things कि साउथ एशिया एक बहुत बड़ा इलाका था और दो या दो से भी ज्यादा मुल्क वहां पर बन सकते थे. द मुस्लिम्स वर न्यूमरस इनफ, और मुसलमान जो थे उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि दुनिया की बहुत सारी कौमें जो थी उनकी भी तादाद इतनी ज्यादा अभी भी नहीं है जितनी कि उस वक्त मुसलमानों की थी. सो दे वर न्यूमरस इनफ टू कॉन्स्टिट्यूट अ नेशन बिगर देन मोस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड, एंड इन साउथ एशिया दे वर लार्ज इनफ एरियाज वेयर दे वर इन मेजॉरिटी. और साउथ एशिया में ऐसे इलाके थे जहां पर सिर्फ मुसलमान मेजॉरिटी में थे. And it is these areas that were separated and today form the independent sovereign state of Pakistan. Sovereign means azad, khud mukhtar. We believed then and we believe now that the demand of the Muslim in British India to have a separate state of their own was both on human and geopolitical grounds a very reasonable demand. So it was a reasonable demand from human point of view, इंसानी बुनियादों पर, और जमीनी हकायक को और सियासी हकायक को भी अगर आप सामने रखें. जियो मीन्स जमीनी एंड पॉलिटिकल मीन्स सियासी बुनियादों पर भी जो थी ये एक रीजनेबल डिमांड थी, क्योंकि मुसलमान कभी भी जो थी उस 1/3 की जो मेजॉरिटी का रेशियो था उसमें वहां पर वो जो है अपनी हुकूमत नहीं बना सकते थे. एंड दे हैड टू सफर अ ग्रेट सेटबैक फ्रॉम कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, from every aspect of life. So it was better for them to have a separate country of their own where they could develop their own culture. To millions of Muslims, it meant to only opportunity for genuine freedom and genuine self-government. To millions of Hindus, it gave the same opportunity for developing their own culture, untrammeled by the constant discontent of a large and unmanageable minority. लार्ज एंड अनमैनेजेबल माइनॉरिटी, यानी कि मुसलमान माइनॉरिटी में तो थे लेकिन वो इतनी ज्यादा तादाद में थे कि ये माइनॉरिटी भी जो थी वो अनमैनेजेबल थी, यानी कि इसको संभालना, कंट्रोल करना इतना आसान नहीं था. सो इट वाज आल्सो बेटर फॉर द हिंदूज टू हैव अ सेपरेट कंट्री ऑफ देयर ओन वेयर दे कुड डेवलप अ कल्चर ऑफ देयर ओन, कि वो जहां पर अपना कल्चर जो है डेवलप कर सके, untrammeled by the constant discontent, जो कि जिसको कि किसी चीज का खौफ ना हो, constant discontent का कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग रहते हैं जो कि हमसे खुश नहीं है या हम उनसे खुश नहीं है, हम उनको पसंद नहीं करते हैं. untrammeled का मतलब होता है जिसे किसी चीज का कोई खौफ ना हो, और discontent का मतलब होता है खौफ. So untrammeled by the constant discontent of a large and unmanageable minority. From the point of view of world peace, the creation of two independent and comparatively homogeneous states instead of a single uneasy and unwieldy state with great strains and stresses within the body politics was the greatest contribution that could be made towards the creation of a stable new Asia. From a point of view of world peace, कि दुनिया में अमन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है एक ऐसे एशिया के हिस्से का होना जो है वो ज्यादा सूदमंद था जहां पर जो है लोग आपस में लड़े नहीं और जो है अलग अलग रहें लेकिन एक दूसरे का एहतराम करते हुए रहें. सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वर्ल्ड पीस, द क्रिएशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट एंड कंपैरेटिवली होमोजेनस स्टेट्स. होमोजेनस मींस जहां पर एक जैसे लोग रहते हो, एज पाकिस्तान मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं और जैसे इंडिया मेजॉरिटी में हिंदू हैं, तो कंपैरेटिवली होमोजेनस स्टेट्स इंस्टेड ऑफ ए single uneasy unwieldy state. अनईजी एंड अनवील्डी स्टेट, कि एक ऐसी स्टेट जो कि अनईजी है, बहुत बड़ी है, मुख्तलिफ किस्म के लोग रहते हैं, लेकिन वो स्टेट जो है अनईजी है और अनवील्डी है, जिसमें इत्तेहाद नहीं है, विद ग्रेट स्ट्रेन्स एंड स्ट्रेसेस विद इन द बॉडी पॉलिटिक, और अंदरूनी तौर पर जो है उनके अंदर बहुत खिंचाव है और बहुत ज्यादा जो है स्ट्रेस है लोगों के ऊपर. So, लिहाजा creation of Pakistan was the greatest contribution that could be made towards the creation of a stable new Asia. So it was better to have two separate homogeneous states.
जहां पर जो है लोग अलग अलग रहे लेकिन एक दूसरे का एहतराम करते हुए. Peace loving men and women who today lament the strained relations between Pakistan and Bharat, and none laments them more than we do, should at least have this consolation that had Pakistan not been separated from the rest of British India, far more serious and dangerous cracks would have appeared in South Asia, resulting in untold upheavals. Untold upheavals means नाकाबले बयान फसादात या हंगामे या इनकलाबात. तो had Pakistan not been separated from the British India, कि अगर पाकिस्तान जो है सेपरेट ना किया होता ब्रिटिश इंडिया से, तो far more serious and dangerous cracks would have appeared. तो कहीं ज्यादा खतरनाक क्रैक्स, दरारें या जो है इनकलाबात जो थे वो आने थे साउथ एशिया में, जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े अनटोल्ड अपीवल्स पैदा होते हैं. अब यहां पर जो है पीस लविंग मैन एंड वुमेन हु टुडे लेमेंट द स्ट्रेन्ड रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड भारत. लेमेंट का मतलब अफसोस करना, कि अमन से मोहब्बत करने वाले लोग दुनिया में जो कि इस बात का अफसोस करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते जो हैं या रिलेशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेन्ड हैं. एंड नन लेमेंट्स देम मोर देन वी डू. और हमें इस चीज का सबसे ज्यादा अफसोस है कि व्हाई वी आर नॉट इन गुड टर्म्स विद इंडिया. और हमें इस चीज का सबसे ज्यादा अफसोस है कि हम लोगों के बीच में जो है इतनी नफरत और इतना गुस्सा और क्यों है, और हम क्यों एक दूसरे के साथ जो है एहतराम से क्यों नहीं रह सकते. सो दे शुड एटलीस्ट हैव दिस कंसोलेशन. उन लोगों को जो है ये तसल्ली होनी चाहिए दैट हैड पाकिस्तान नॉट बीन सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, कि अगर पाकिस्तान बाकी के ब्रिटिश इंडिया से अलग ना होता, फार मोर सीरियस एंड डेंजरस क्रैक्स वुड हैव अपीयर्ड इन साउथ एशिया. तो साउथ एशिया में बहुत बड़े बड़े क्रैक्स पैदा होते हैं, बहुत बड़े बड़े नुकसानात लोगों को उठाने पड़ते हैं, या कहीं ज्यादा दुनिया के लिए जो है साउथ एशिया खतरनाक हो जाता अगर ये दो मुल्क ना बनते. रिजल्टिंग इन अनटोल्ड अपहीवल्स, जिसकी वजह से अनटोल्ड अपहीवल्स पैदा होते हैं. Potentially, therefore, the creation of Pakistan has by itself dissolved what would have been a perpetual danger zone in Asia. कि एशिया जो है वो एक परपेचुअल डेंजर जोन बन जाता अगर पाकिस्तान की क्रिएशन जो है वो ना होती. तो पोटेंशियली मींस अपने नताइज के लिहाज से